Hello, hi everyone. I hope I'm live now. So let me just verify whether I'm properly audible and clearly visible or not. In the meantime, if people have joined me, can you guys just give me a quick confirmation whether I am clearly audible or not, properly visible or not? Just waiting for a quick confirmation for from those people who have already joined me live. I hope you guys are doing well. Let's wait for a few minutes so that everybody will be joining. Those who already have joined, a quick confirmation whether I am clearly visible, properly audible or not. A very good evening, Siddhant. Perfect. Am I visible? Am I audible to everyone? Can we get a quick confirmation? So I hope that you already have seen from the banner what exactly are we talking about today. So today's session will be very interesting session. Thank you so much, Shivam, for the confirmation, properly audible and visible. Thanks, Kunal, for the confirmation. Hello, Prashant. I hope you are doing well. Perfect. So many people have already joined us, and I still feel there are a lot many people who will be joining today because the session topic is quite interesting. In the meantime, people are joining, so I hope everybody knows that what is the in agenda for today's discussion. I hope you already have seen from the thumbnail itself. Today we will be talking about a very interesting project on customer churn part. Maybe you might have worked on this project previously also, but today we have Shubham with us. He will first of all introduce himself, and after that, he will talk about how basically he has done end to end implementation of it. And I'm pretty sure that you will gain a lot of insights from his work because I personally have reviewed the entire flow and a lot of amazing things which he has done. Maybe if you feel that you might have not done that, definitely you should inculcate those specific pointers in your work as well if you have already done it, right? This is an example of a customer churn project, but the same thing you can apply for any machine learning pipeline. So in that scenario, for all the ML specific work, this specific session will be very helpful for everyone, especially for the industry professionals who at any point of time wants to give a delivery to the client stakeholders. So what exactly they are expecting from us today, you will get to know. So without wasting any time, let me introduce Shubham. Hi Shubham, how are you? Yeah, hi Priya. Can you hear me? Can you see me? Yes, you are perfectly audible and visible. How is everything going? Yeah, everything is going fine. How about you? Great. So can you just introduce yourself first and let the audience know what exactly are we covering up today? Yeah, sure. First of all, thanks Priya for giving me this opportunity to present the project in front of these people. Uh, I am Shubham Modi. I come from software engineering background. I have worked as a front-end developer in a startup for 2 years, and now I am transitioning. I took a career break and I'm transitioning into data science domain. And yeah, I've been doing some practical end-to-end projects. And today we'll be seeing the customer churn project because and yeah, I'll be referring to the documents. So I'll be constantly looking from time to time to the second screen as well. So excuse me for that as well, people. Um, so is my screen visible? Yep, it's visible. You can start sharing the document and we can start further. Sure. So this will be our flow. I have introduced myself. We'll be going through the problem statement. We'll see the data set. We'll see the steps which we normally do: data cleaning,
splitting into test and train, then pre-processing, model building, and then eventually comparing the models which we have built, and then we'll conclude by showing the app as well as business insights which we have gleaned. Um so the problem statement. So the core problem we are trying to solve here is customer churn. Now we know that from a business perspective, how much costly it is for any business to uh, uh, acquire a new customer. In startups, we call it, I guess, customer acquisition cost or something like that. So yeah, losing customers impacts revenue, and acquiring a new customer is more expensive than retaining an existing one. So any company would, if a company can identify which customers are more likely to churn, they can take necessary actions to prevent them from churning. Um, from a machine learning technical perspective, ये a typical binary classification problem है, where one means customer will churn and zero means customer won't churn. Now, questions people might have: why are we not using accuracy? Because in churn, generally, missing a churn customer is more costly. So recall becomes more important. And what action will the company take? There are a lot of actions, like we can target high risk customers and we can retain them by giving discounts or better plans or giving better services to them. So yeah, now we will go on to the data set. So for this project, I have used this tally customer churn from Kaggle. Uh, this Okay, particular before data. we will jump towards this data understanding part, Hmm, I hope this is clear to everyone what exactly our project is all about, because understanding the problem is very important. You already have hmm, stated that. Basically, churning means the customers who stop using your services because of any specific reason. What we want is, at the end of the day, we want to stop that. As he has already mentioned, ki getting a new customer is a difficult process, requires a lot of cost from companies end, as comparable to retaining that customer itself. So it's a generalized problem. You can understand that now every kind of a domain problem usually requires this churning thing, right? They want to reduce this churn rate. So now he will be talking about the end-to-end ML flow, how we can do that, what is the pipeline all about. And as I have mentioned in the starting, it is a generalized pipeline. So have a look onto this very carefully. Write your questions in the chat window side by side. I'm looking onto it and will try to respond either your questions on the spot in the chat, or maybe we will take at the very end of the session. So please, when you're listening to the session, maybe you should have your own copy pen and just write it down, whatever be the important pointers you have understood or you have actually gained from this session, and what are the important insights we have. You can document it and you can comment it after the session will be over. And in the session, if you have any questions, please start asking side by side. Yes, Shubham, continue. yeah. So this data set from Kaggle, which we have downloaded, it has 21 features in it, uh, which has some demographics details like genders, uh, if the customer is senior citizen or not, if he or she has a partner or not, if he or she has any dependents. Then we have some numerical service related features as well, like online backup, device protection, tech support, if streaming movies or TVs, if those services the customer has taken or not, contract for how the customer is being paying to the company, whether it is month to month contracts or 1 year or 2 year, and the payment methods as well, that monthly charges, total charges, how paperless billing payment method, as the name suggests, it is very clear. And the resultant our target variable churn,
which will ultimately give the results whether this particular customers has churned or not. This data set has around 7,000 plus records, 21 features, and which covers, as I said, customer demographics, services, and billing details. The target variable here is churn, as I told you, and it contains yes or no. So yes means the customer will churn, no means the customer won't churn. And if अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, so what could be the major reasons? What could be the major, I would say, features which would impact the churn? I feel tenure is something which might impact. Then contract is something that whether the customer, it is possible that a customer has taken only a 1 year contract, so that customer might uh, is more likely to churn. We don't know that. That might be the case. We will see that. And also the charges. So whether it is total or monthly charges, obviously price sensitive customers would definitely churn if the monthly prices or total prices is more. So yeah, now I'll move on to the code. So this is the notebook where we have imported the necessary libraries, pandas, numpy, cbon, matplotlib. Uh, we have also implemented pipeline imputer, which we'll definitely see in the next steps. And then finally, these three models, and then the metrics. Uh, when we saw the data info initially, uh, if you see the data type, you would see that the categorical features obviously has object type, and tenure has integer type. Senior citizen is, although it is integer, but it it the main aspect is it is just saying that if the customer is a senior citizen or not. But here we see total charges has the object data type. So this is, I would say, a data issue. So some values were stored as blank strings. So what we have done is we have first of all converted those to numeric, and using pd.toNumeric. And I have used error scores uh, so that any invalid values can be converted to NaN, so not a number. Then I have calculated exactly how much uh, how much to remove the rows where total charges was missing, since those records are not really needed. And I also counted how much rows did we dropped. So not a numbers जो भी हमने calculate किया था, दो जो भी invalid values which were calculated here, uh, we checked how many rows does have as not a numbers, and there are 11 rows, and dropping those 11 rows out of 7,000 records won't really make much difference. So that's why we chose to drop that. Then हमने इसको obviously our target feature is churn. We bifurcated into numerical features and categorical features, which is quite obvious that numeric may these charges and tenure will come, and rest of these things will come in categorical features. Uh, the Y represents our target, which is the churn. X represents the all the features which will definitely take into the training. Where we try to see how many yes and how many no. So basically, kitne customers, those who have churned, and how many are there to which customers have not churned. So basically, हम class imbalance check कर रहे हैं. So here you can see that about 5,000 out of 7,000 haven't churned. एंड यस में है 1800 समथिंग. सो बहुत ही ये रेशियो इम्बैलेंस्ड है, ये 50-50 नहीं है. सो देर आर चांसेस ऑफ दिस मॉडल taking this biasness into consideration, or the model might learn that the customer is more likely to not churn instead of churning.
फिर वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. How we will counter that, we'll see आगे. So now what we have done, then we have obviously used a 70-30 train test split, and we have used stratify equals to y. Now stratify equals to y क्या करता है? Stratify equals to y, जो भी हमने ये imbalance देखा है, जो भी इसका रेशियो है, वो ट्रेन और टेस्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. So as to ensure the proper proportion, ताकि बायसनेस ना हो. ट्रेन सेट में भी यही रेशियो होगा और टेस्ट में भी यही रेशियो होगा. एंड वी ऑल्सो कैलकुलेटेड, we obviously mapped the yes is to 1 and no to 0, because obviously machine learning models require numerical input. So we did that, and then we also calculated कि अगर पहले y में कितना churn rate था, then y train and y test. uh, and you can see 0.27. So basically हमारा ये stratify equals to y ensured that the class distribution is constant across train and test, which is very important. Okay, now few questions you might have. Why 70-30 split? So it provides a good balance between training the model effectively, and having enough data to evaluate and let the machine learn from the data, from the test data, sorry, from the train data. Uh, then why not use cross validation? So cross validation we can also use. It is more robust evaluation, but for this project I have used train test split. uh, what happens if we don't use stratify? So the class distribution might become uneven, or which can lead to biased model. अगर मान लो ट्रेन में 40% होता churn rate और टेस्ट में 10% होता, तो you can imagine the biasness it would lead to. उससे फिर आगे metrics भी impact होते हैं ultimately, which we don't want. Now we'll move to pre-processing pipeline. I have imported column transformer, and what I have done is I have created a pipeline. So since the dataset contains both numerical and categorical features, I've handled them separately using pipeline-based approach. So for numerical, we have used imputer, in which missing values are handled using median. So because obviously it makes sense, अगर tenure, let's say tenure है, या फिर total charges है, या फिर monthly charges है, अगर if that value is missing, तो हम best यही करेंगे कि हम उसका median निकाल के उसको impute करें. So for that we have used simple imputer. Then we have then the data is used scaled using standard scaler, and scaling is generally done so that सारे numerical features are on same scale, which is important in models like this. Then categorical transformer, उसमें हमने again impute किया है. अब categorical features में let's say कोई भी एक feature हम ले लेते हैं. Let's say streaming movies. If उसमें there are options, if there are blank values, तो उसमें what we can do, obviously categorical features का हम median तो नहीं निकाल सकते, but उसमें we can use mode. So that's why we have used most frequent, which is obviously mode, for categorical features. Then I have applied one hot encoding to convert categorical into numerical format. One hot encoding I will show you. वो ऐसा होता है. Let's say color, हमारे पास इतने records है, red red, yellow green yellow, तो वो ऐसे convert करता है इसमें कि first row में red 1, yellow and ये 0, then 1, ये वाली जो है उसमें yellow. So this third row is yellow, so यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, because हमें numerical चाहिए format. So that's why we have used one hot encoder. And कोई भी unseen categories हो उसको हम ignore करेंगे. That's why we have used handle unknown ignore. Okay. Now
we have used column transformer to apply this transformation to the respective groups. So न्यूमेरिकल फीचर्स है उसको ये वाली जो ऊपर पाइपलाइन है उसके साथ कैटेगोरिकल फीचर्स को कैटेगोरिकल पाइपलाइन के साथ and within a single this ensures that uh, numerical and categorical features are processed appropriately in a single unified pipeline. Then I have used reminder is equals to drop. इससे ये होता है कि जो भी कॉलम्स इसमें स्पेसिफाइड नहीं है उसको हम ड्रॉप कर देंगे बिकॉज वो अननेसेसरी कॉलम्स हो गए हमारे यूज केस के लिए सो उसके लिए ये रिमाइंडर इक्वल्स टू ड्रॉप नाउ हमने ये कर दिया नाउ वी विल ऑब्वियसली use logistic regression with this. I combined everything into single pipeline, which contains the pre-processing part as well as the model training part. And here हमने एक पहले ये बताया था कि वो जो class imbalance है, that's why the model might be biased towards the customer not churning. How we'll counter that through this line. We will use class weight is equals to balanced. इससे that challenge will be मतलब वो challenge हम इससे solve कर देंगे. Class weight is equals to balanced. सो इससे बेसिकली जो माइनॉरिटी क्लासेस होती है जो भी इन आर केस यस वाली जो क्लास है कस्टमर विल चर्न उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस ये मॉडल देता है ताकि बैलेंस आउट हो सके ओके नाउ फ्यू क्वेश्चंस why which you might have why use pipeline instead of manual processing pipeline ensures that pre-processing and model training are tightly coupled. So इसमें inconsistency हम prevent कर सकते हैं and we can obviously use for other models which will definitely look at it आगे. And it's easier to manage and deploy. Uh, Obviously why logistic regression first because वो baseline model है for which is simple and interpretable. So yeah, we have used that, and then we'll go to the more complex model and compare. Median तो हमने देख लिया. Yeah. Now we'll go to model building part. So we have used fit. We have given the training set, and we have trained the model. We have uh, predicted by giving the test, and we have printed the prediction. And we have also printed the probabilities. So ये हो गया 0 and 1s prediction whether the customer will churn or not और ये हो गया उसकी probability कि इस customer की कितनी probability है churn करने की. So and then we'll uh, print the metrics जो भी recall score, confusion metrics, precision हो गया, accuracy हो गया, F1 score हो गया, and then एक classification report में we'll get कि zeros का क्या scores है और 1 का क्या scores है. Okay, So there are few questions, Shubham. Let's take that okay, as well. sure. They are saying how we are handling the imbalancing in the data set. Although we have covered up, but you can just talk about it. Mhm. So in dataset, as I told you, there are more no's than yes. So model is more likely to predict that the customer is not uh, customer churn नहीं करेगा basically. So Hmm. first of all, हमने train और टेस्ट में स्प्लिट में we have used this stratify equals to y. इससे क्या होगा कि वॉट एवर रेशियो विच वी हैव इन आर डेटा सेट जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो ये ट्रेनिंग पार्ट और ये छोटा सा टेस्टिंग पार्ट इसमें भी इस वाले ट्रेनिंग पार्ट में उतना ही रेशियो होगा जो हमारे पास एज अ होल में था एंड सेम गोज विद दिस जो छोटा सा पार्ट है टेस्टिंग इसमें भी उतना ही होगा रेशियो जो हमारे एज अ होल में था सो इन आर केस इट इज 0.27. So we Hmm. saw that training में and testing में it is 0.27. Similarly, जो imbalance है हमने यहाँ पे
while training ये मॉडल हमने यहाँ पे लिखा है क्लास वेट इज इक्वल्स टू बैलेंस्ड. अब इससे क्या होगा? It will give more priority and more importance to the minority. So if even if let's say एक टीचर है एंड उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं एंड लेट्स से उसमें से कुछ आउट ऑफ 60 there are 10 students who are not performing well in their exams. So obviously दो टीचर है वो उन 10 बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेगी ताकि वो लोग अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम्स में, ताकि द ओवरऑल एवरेज मार्क्स वो बैलेंस आउट हो जाए. सो दिस क्लास वेट बैलेंस हम इसी से इस चीज को काउंटर करते हैं. आई होप आई हैव आंसर्ड द I hope क्वेरी. this answers your question, Biswajit. The second question that we have is by Prithvi. He's suggesting that instead of using one hot encoding, it's better to use label encoding because the computation takes more time. What do you think? वन हॉट एनकोडिंग की जगह लेबल एनकोडिंग. So he is saying that the computation will take more time for one hot encoding. As per Prithvi. Actually, I have not explored that yet कि किसमें ज़्यादा computation time आगा, but I'll surely look at it and see कि label encoding will it serve our purpose well or not. So yeah. Yep. But I do think that one hot encoding is also effective over here. Mm-hmm. And as per the parameters that we have mentioned and the categorical types that we will be having, uh, Mm-hmm. see, we cannot apply label encoding to every specific type of a category. Mm-hmm. Another issue it can cause is the biasness because it Mm-hmm. provides labels corresponding to each and every category. One hot Mm-hmm. encoding is that's the reason is an ideal choice. Um, so maybe we can try, we can explore. I mean, how we are getting the Mm-hmm. results with the label encoding as well. Mm-hmm. But by saying that, one hot encoding is also a good choice. Yeah, yeah. Mm, Thank you, okay, Prithvi, there is for the one more. recommendation. I'll say. Hmm. Yeah, there is one more question by Biswajit. He's saying that you split the data into training and testing part, where Hmm. training data is 70%, testing is 30%. So Hmm. how data is divided into same part? Oh, so I think he is having that confusion of stratify parameter. So he's just saying कि हमने लिखा तो 70-30 है, तो वो Hmm. कैसे आप बोल रहे हो कि proportion same division करेगा? Hmm. So, can you repeat the name? कौन था? Biswajit. Biswajit. So, Biswajit, what this कहाँ गया? Train test split obviously ऊपर होगा. हाँ. So, train test split क्या करेगा? So, ये जो पूरा रिकॉर्ड है, 7,000 रिकॉर्ड्स है, उसमें से अब इस 7,000 रिकॉर्ड्स में से ये हमारा चर्न रेट है 0.27. सो 0.27% ऑफ द वैल्यू जो हमारी वो एक कॉलम है चर्न, 27% ऑफ द कस्टमर्स आउट ऑफ 27% आउट ऑफ 7,000 प्लस कस्टमर्स वो चर्न कर रहे हैं एंड बाकी नहीं कर रहे हैं, राइट. अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो तो हम ऑब्वियसली करेंगे बिकॉज हर मॉडल को ट्रेनिंग चाहिए और टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट करेंगे कि मॉडल कितना अच्छा बना है. So by specifying this parameter, what we are doing is we are telling this train test split method कि भाई तुम उस तरीके से ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट करो कि द ओवरऑल रेशियो है वो मेंटेन रहे. So out of the 7,000, 0.27 is the churn rate. 27% of 7,000 plus records या customers have churned. तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ से मान लो हमने काट दिया, तो इतना ट्रेन है और इतना ज्यादा इतना इतना टेस्ट है और इतना ज्यादा ट्रेन है. सो दिस इतना ज्यादा ट्रेन उसमें भी 27% जितना भी हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. 30% ऑफ 7 कितने 7,000 प्लस कितना होता है, उसमें भी आपको वही रेशियो मेंटेन करके रखना है. सो द Exactly. चर्न So नंबर. basically,
या बेसिकली हम्म व्हाट ही मेंट टू से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो हम्म हमने क्या बोला कि 700 रिकॉर्ड्स हमारे ट्रेनिंग में जाएंगे और 300 रिकॉर्ड्स हमारे टेस्टिंग में जाएंगे। अब उन हम्म 700 रिकॉर्ड्स में भी हम प्रपोर्शन डिसाइड कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल प्रपोर्शन से मैच करता हुआ है। सो व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट शुभम इज सेइंग कि 27% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि चर्न कर रहे हैं, राइट शुभम? यस वाले यस हैं। और यस यस रिमेनिंग आर द प्रपोर्शन विच आर नॉन चर्निंग। तो हम ये बोल रहे हैं कि 700 रिकॉर्ड में भी हम उसी स्प्लिट को लेके चलेंगे ताकि बायसनेस ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास 70% जो सैंपल आ रहे हैं, जो 700 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो सारे नॉन चर्निंग रिकॉर्ड्स के आ गए। तो दैट इज द रीजन यू कैन यूज बिस्वजीत अप सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग, बट अगर आपको एक सेपरेट टेक्निक यूज ना करके हैंडल करना है, इफ यू वांट टू हैंडल दैट यू नो imbalancing of a data without using a dedicated technique, this is one of the way, ठीक है, what he is talking about. So that is the main thing which you have to learn over here. I hope it is clear now to everyone. I think we can proceed further. All good? मजा आ रहा है? Is everybody enjoying it? Perfect. Let's move forward. Okay, so after generating all these metrics, we are plotting the ROC curve. तो ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट हमने इसमें से निकाला है. सो बेसिकली आई क्विकली गिव अ रिवीजन. ये हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यूज, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ट्रू नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे आ गया. सो अगर एक्चुअल एक्चुअल में नेगेटिव है एंड प्रेडिक्टेड भी नेगेटिव है तो मतलब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है, तो ये ट्रू नेगेटिव हो गया. सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ट्रू पॉजिटिव. एंड सिमिलरली आप यू कैन फाइंड आउट दैट ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हो गया. ऑब्वियसली हमने ये मेंटेन यहाँ पे भी लिखा है. तो व्हाट वी हैव डन इज हमने इसमें से आरओसी कर्व के लिए ऑब्वियसली फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट हमें कैलकुलेट करना होता है. तो ट्रू पॉजिटिव रेट इज ट्रू पॉजिटिव ये वाला डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. सो जो जो भी नेगेटिव्स प्रेडिक्ट किए और वो एक्चुअली में पॉजिटिव थे, तो एक्चुअल पॉजिटिव हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे और डिवाइडेड बाय कितने सही से उसने कैलकुलेट किए, प्रेडिक्ट किए, सॉरी. सिमिलरली ये हो गया ट्रू पॉजिटिव रेट एंड ये हो गया सिमिलरली फॉल्स पॉजिटिव रेट. इसका हमने आरओसी निकाला स्कोर, तो हमारे पास 85% है एंड वी प्लॉटेड and this is how it looks. So ROC area is 0.85. So which is fairly good. मतलब 8.85 80% के above आया तो काफी ROC AUC value is at least good. अब हम इस हमने ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर दिया. नाउ वी विल मूव टू रैंडम फॉरेस्ट. एक मॉडल हमने टेस्ट कर लिया, हमारे मैट्रिक्स आ गए. अब हम रैंडम फॉरेस्ट को ट्राई करेंगे. सो हियर आई क्रिएटेड पाइपलाइन दैट कंबाइंस बोथ. हमने जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है जो हमने आगे डिफाइन किए, तो ये हमने पाइपलाइन बनाई जहाँ पे वो स्टेप्स होंगे. एंड देन आई यूज रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर where n estimators is 200. So n estimators, as you guys all know, that they are the number of trees in the forest. So I used 200 trees to make it more reliable and more stable. उससे वेरिएंस ऑब्वियसली रिड्यूस होता है, बट हम जितने ट्रीज बढ़ाएंगे तो कंप्यूटेशन टाइम भी उतना बढ़ जाएगा. सिमिलरली वो जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है, क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस, से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि द मॉडल गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द चर्न कस्टमर्स बिकॉज उसका रेट हमारे पास कम है, 0.27 है टू बी मोर प्रिसाइज. तो ये क्लास इम्बैलेंस को हैंडल करता है. या देन वी फिट, हम ये फिट करते हैं. हम इसका प्रेडिक्शन निकालते हैं एंड पहले भी हमने किया था, प्रोबेबिलिटीज भी निकालते हैं एंड फिर There जो भी is a मैट्रिक्स. question, Shubham. Can you show one more time pre-processor part of the code प्री प्रोसेस, श्योर. and repeat that part again? सो प्री प्रोसेसर पार्ट ऑफ कोड ये रहा. हम इसमें यहाँ से ही जाते हैं फर्स्ट स्टेप से, ताकि बिकॉज सारी चीजें कवर होनी चाहिए.
सो हमने क्या किया है कि दो चीजें हमारे पास, न्यूमेरिकल फीचर्स और कैटेगोरिकल फीचर्स। न्यूमेरिकल फीचर्स हमने देखा तो टोटल चार्जेस, मंथली चार्जेस और टेन्योर हो गया, और बाकी के कैटेगोरिकल फीचर्स है। तो न्यूमेरिकल फीचर्स में हमने क्या किया, सिंपल इंप्यूटर यूज किया कि जो भी ब्लैंक वैल्यूज है उसको हम सिंपल इंप्यूटर क्या करेगा, उसका वो जो पूरी कॉलम है उसका जो भी मीडियन वैल्यू है वो उसको इंप्यूट करेगा। सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से इन टेन्योर में, if there is a blank tenure, it will replace it with the median of that tenure column. And we have obviously scaled using standard scaler because scaling is important. That's why, because biasness now, that's why we scale the numerical features. Then ऐसा हो सकता है ना कि let's say uh, let's say we are making some model, let's say price of क्या कहते हैं, लेट्स से प्राइस ऑफ हाउस, और उसमें फीचर्स है, लेट्स से बेडरूम्स हो गए, एरिया हो गया, तो बेडरूम्स होंगे दो तीन, एरिया होगा लेट्स से 3500, 2500, 2000 स्क्वायर फुट, या जो भी यूनिट्स है। तो 3 और 2500 में 2500 माइट गेट मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज वो वैल्यू हाई है, तो बिकॉज हमें उसको स्केल करना है तो हम ये यूज करते हैं। सिमिलरली हमने कैटेगोरिकल डेटा में ये किया कि जस्ट लाइक वी इम्प्यूटेड मीडियन ऑफ दिस कैटेगोरिकल, जो भी कॉलम्स है, लेट्स से उसमें हो गया, लेट्स से डिपेंडेंस हो गए कि डिपेंडेंस आर देयर एंड डिपेंडेंस और नॉट। सो यस और नो होगा उसमें, तो यस और नो का मीडियन तो नहीं निकाल पाएंगे, मीन नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या निकालेंगे, हम ऑब्वियसली उसमें इन जो भी ब्लैंक वैल्यूज है वी विल हमारा इंट्यूशन यही बोलेगा कि भाई जो मेजोरिटी हो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो, मोड हो, उसको आप उससे रिप्लेस कर दो। सो वी हैव imputed most frequent in that simple imputer, and then we did one hot encoding which we saw in the diagram, that one जो भी कैटेगोरिकल कॉलम्स है उसको वन हॉट एनकोडिंग से एनकोडिंग हो जाएगी ताकि वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाए। नाउ ये दोनों हमने कर दिया, वी यूज्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मर फॉर यूनिफाइंग दैट, बोथ न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल में चला गया, कैटेगोरिकल का कैटेगोरिकल में चला गया। देन व्हाट वी डिड इज वी मेड अ पाइपलाइन, एंड इन दैट पाइपलाइन, ये हमारा प्री प्रोसेसर हो गया, वी यूज्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मर, एंड उसमें बेसिकली एक सिंगल पाइपलाइन में हमने दोनों चीजें कर दी, ये वाला कैटेगोरिकल प्री प्रोसेसिंग और न्यूमेरिकल वाला भी प्री प्रोसेसिंग। तो ये एज अ होल ये प्री प्रोसेसर हमने बना दिया, एंड दिस प्री प्रोसेसर वी विल यूज इन एवरी मॉडल। हमारा सिर्फ यहाँ पे ये जो मॉडल है ना वो चेंज होता रहेगा, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें वो प्री प्रोसेसिंग तो चाहिए ही चाहिए डेटा में, तभी तो डेटा उस फॉर्मेट में आएगा जो मशीन लर्निंग को समझ में आएगा, मॉडल्स को समझ में आएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेरी। Yep, I think we can proceed further. Yeah. Just a second. Yeah, so just a second. Yeah, so हमने RF random forest model, we trained it, and then हमने उसका classification report निकाला, we also printed its confusion matrix, and हमने इसका ROC EU से निकाला which came to 80.82, right? और ये हमारा ROC EU से कर्व है। Then we used cross validation. Now cross validation, just brief में मैं बता दूं. So cross validation is a technique for partitioning data into subsets, training on some and testing on the remaining data. So इससे क्या होता है
कि लेट्स से हमने ये 5-fold K-fold वैलिडेशन टेक्निक है, इसमें हमने 5-fold किया है। और पहले में हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेंगे डेटा सेट का, और ये 4 होंगे ट्रेनिंग, ये होगा टेस्ट। सिमिलरली हम दूसरे में इस वाले फोल्ड को लेंगे और बाकी के, एंड सिमिलरली ये ऐसे 5 होंगे। एंड हम क्या करेंगे, इसका हम फिर एवरेज निकाल देंगे, जो भी आर ओ सी ए यू से आ रहा है उसके बेसिस पे हम एवरेज निकाल देंगे, एंड वी विल गेट द स्कोर। जस्ट अ सेकेंड। या सो बेसिकली हमने इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पहले क्रॉस वैलिडेशन किया, एंड ये 5 CV इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है 5-fold हमने ये किया, और उसका हमारा 0.84 आया आर ओ सी यू सी। सिमिलरली हमने RF मॉडल रैंडम फॉरेस्ट का किया है, उसका हमारा इतना आया। ठीक है, नाउ सो ऑब्वियसली एज आई सेड, क्रॉस वैलिडेशन होगा, ट्रेन मॉडल्स ऑन 4 पार्ट्स, एक में रिमेनिंग, एंड कंप्यूट आर ओ सी यू सी, एंड विल टेक आउट द एवरेज ऑफ 5। इसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि वाई नॉट यूज 10 फोल्ड्स। तो 10 फोल्ड्स बेटर एस्टिमेशन दे सकता है, बट इससे कंप्यूटेशन टाइम पे बहुत बढ़ सकता है। सो दैट्स व्हाई 5 फोल्ड इज सफिशिएंट इन आवर केस। व्हाट इफ वी डोंट यूज क्रॉस वैलिडेशन? तो फिर ये हो सकता है, तो मॉडल इवेल्युएशन सिर्फ एक ही जो स्प्लिट है उस पे डिपेंड करेगा, जो शायद कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड K-fold validation, cross validation. Uh, then we did hyperparameter tuning. Now hyperparameter tuning, uh, वो एक प्रोसेस है ऑफ सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल वैल्यूज फॉर मशीन लर्निंग हाइपर पैरामीटर्स। सो जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जितने भी पैरामीटर्स आते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है वो हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से कर सकते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा हमारा आर ओ सी यू सी आ जाए। सो वी डिड दैट यूजिंग ग्रिड सर्च CV, वेयर हम लोग ने एन एस्टिमेटर्स, ये होगा ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रीज हो गया, फिर मॉडल्स मैक्स डेप्थ हो गया, कितना, हाउ डीप ईच ट्री कैन ग्रो। सो एज आई टोल्ड यू, एन एस्टिमेटर्स में द मोर द नंबर ऑफ ट्रीज द मोर स्टेबिलिटी, बट द मोर उससे कंप्यूटेशन टाइम भी उतना ही बढ़ेगा। मैक्स डेप्थ में जितना डीप में वो ट्रीज, जितना हम डीप करेंगे ट्रीज को, उतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वो समझेगा, बट ज्यादा डीप होने से वो ओवर फिटिंग भी हो सकता है। सो ये एक हो गया। फिर मिनिमम सैंपल स्प्लिट, ये मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ नोड। स्मॉल वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा स्प्लिट्स होंगे, स्मॉल वैल्यू होगी तो, एंड लार्ज वैल्यू होगी तो बहुत कम स्प्लिट्स होंगे। तो ज्यादा स्प्लिट होंगे तो कॉम्प्लेक्स मॉडल बड़ा बनेगा, एंड कम स्प्लिट होंगे तो सिंपल मॉडल मिलेगा ओवरऑल। सो हमने ये किया, एंड वी देन ऑब्वियसली हमने ये रन किया, हमने फिर से इसको मॉडल ट्रेन किया, और इसने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने लगाए, एंड वी फिर हमने ग्रिड RF, बेसिकली हमें ये जो मॉडल मिला आफ्टर अप्लाइंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, वी टुक आउट द बेस्ट पैरामीटर्स एंड बेस्ट स्कोर ऑफ दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये है उसके बेस्ट पैरामीटर्स, ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, एंड उसका बेस्ट स्कोर आया 84 ROC UC कर्व। सो फिर हमने क्या किया, हमने ऑब्वियसली अगेन इससे प्रेडिक्शन किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट की है, इसका हमने ROC AUC और क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, स्कोर, ये सारी हमने चीज़ें यहाँ पे प्रिंट की है। नाउ हमने क्या किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने फीचर इंपॉर्टेंस, हम वी गेट फीचर इंपॉर्टेंस फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट।
तो रैंडम फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है जिससे की ड्राइवर्स जो हमारे जो सबसे इम्पैक्टिंग फीचर्स है वो वी गेट थ्रू दिस like since the data goes from pre-processing like one hot encoding हमने किया ओरिजिनल फीचर उसके वजह से ओरिजिनल जो फीचर्स है उसका नेम चेंज हो जाता है सो बेसिकली लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नेम ऐसा हो सकता है एनकोडिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्कोर मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्कोर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्कोर 2 ईयर तो ये नेम चेंज हो गए तो हमें इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द फाइनल फीचर्स हम ये करते हैं हम प्री प्रोसेसर में जाते हैं एंड हम उसमें से फीचर नेम्स निकालते हैं एंड जो फीचर इंपॉर्टेंसेस है जो रैंडम फॉरेस्ट हमें देता है हम वो निकालते हैं और हमने इसको डेटा फ्रेम में सॉर्ट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने निकाल दिया है सो इसमें से वी आर नाउ गेटिंग कि सबसे टॉप इम्पैक्टिंग फीचर्स कौन से सो आर केस में नम टेन्योर आ गया कॉन्ट्रैक्ट मंथ टू मंथ आ गया टोटल चार्जेस आ गया एंड हमने इसका बार ग्राफ भी बनाया तो we can see these are the top drivers of customer churn as far as random forest is concerned. तो tenure month to month total charges contract type basically tenure month to month का मतलब and yeah so after this मैंने एक ये चीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए की थी कि थ्रेशोल्ड ट्यूनिंग सो जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन में यू माइट नो दैट एक थ्रेशोल्ड होता है 0 या 1 ही हमें प्रेडिक्ट करना है अब जो प्रोबेबिलिटीज है किसी की 0.3 होगी किसी की 0.48 होगी किसी की 0.52 होगी तो जनरली डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड इज एज यू नो 0.5 होता है कि आधे से ज्यादा होगा तो 1 और आधे से कम होगा तो 0 राइट नाउ आई वांटेड टू सी कि कौन सा ऑप्टिमल होगा थ्रेशोल्ड इन आर केस सो व्हाट आई डिड इज एक np डॉट अरेंज हमने 0.1 से लेके 0.9 तक 0.05 क्या एक ये हमने बनाया तो 0.10 0.015 ये आता रहेगा एंड हमने इसमें से ये किया कि जैसे हमारे केस में चर्न प्रॉब्लम है तो इसमें रिकॉल ज्यादा मैटर करता है बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा चर्न कस्टमर्स पकड़ने हैं सो हमने ये जो प्रोबेबिलिटीज है उसमें से जो भी प्रोबेबिलिटीज मान लो 0.10 इसने लिया है हमने लूप किया है उससे ज्यादा है तो हम उसको वो सेट कर देंगे और उस हिसाब से हम लोग ने प्रेसिजन निकाला रिकॉल निकाला F1 स्कोर निकाला and we made a data frame of it and we saw the results कि कौन से थ्रेशोल्ड में कितना प्रिसीजन कितना रिकॉल आएगा सो बेसिकली ये करने के बाद भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने थ्रेशोल्ड 0.5 ही चुना था बिकॉज यू विल सी इट हियर इसका ये जो ग्राफ मैंने जो बनाया उसमें हाँ ये मिलेगा कुछ 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं पे बट हमारे केस में एज वी सेड हमें रिकॉल ज्यादा चाहिए सो डेट्स व्हाई इट इज बेटर टू चूज 0.5 जिसमें रिकॉल ज्यादा हो एज वेल एज बैलेंस्ड प्रिसीजन एंड F1 स्कोर सो इवन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट आई टुक 0.5 ही हमने इसको रहने दिया एंड या देन ऑब्वियसली जो हमारा बेस्ट रैंडम फॉरेस्ट जो हमने बेस्ट पैरामीटर्स से निकाला था उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने बनाया एंड देन आल्सो आई कंपेयर्ड बोथ मॉडल्स का आरओसी एओसी का इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों ही 0.85 दिखा रहे दिस रैंडम फॉरेस्ट इज आई गेस ये वाला ना हाँ वो बेस्ट वाला तो उसका दोनों का ऑलमोस्ट सेम है
and yeah. So now what I did is uh, basically then I converted this probabilities into business friendly risk segments. तो हमने क्या किया कि 0 से 0.3, फिर 0.3 से 0.6 और 0.6 से 1, ये हमने 3 रेंज लिए, and we divided the customer into 3 fragments: low risk, medium risk and high risk. So 0 से 0.3 के बीच में वो लो रिस्क वाले होंगे, ये वाले मीडियम और ये वाले हाई, एंड हमने उसका वैल्यू काउंट्स किया कि कितने कस्टमर्स इन इन जगहों पे लाई करते हैं, एंड वी गॉट दिस रिजल्ट्स कि इतने कस्टमर्स लो रिस्क है, इतने हाई है और इतने मीडियम रिस्क है, based on this predicting probabilities which we got. Yeah, and obviously हमने ये दोनों मॉडल सेव कर दिए, बिकॉज हम इसका ऐप भी बनाएंगे तो we will use that over there. And yeah, now one important concept, uh, SHAP. So SHAP जैसे we already have feature importance, ठीक है, फीचर्स हमारे पास टॉप इम्पैक्टिंग फीचर्स आ गए, सो वी नो कौन से फीचर्स ज्यादा हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट विच फीचर्स, कौन से फीचर्स किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, वी डोंट नो. सो it helps us to understand how each features contributes to a model's prediction. So each feature is like a team member contributing to the final prediction. वो हर एक टीम मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, if we want to know, then SHAP is used. Uh, so basically हमने ये again SHAP को import किया, हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेप में से X ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया, and we got the features name, and here we uh, took the best random forest wala model, and we used shape.tree explainer. Now shape में most probably जितना मैंने पढ़ा था अलग अलग होता है, जैसे ट्री एक्सप्लेनर हमने इसलिए यूज किया बिकॉज रैंडम फॉरेस्ट एक ट्री बेस्ड है, and this explainer is used to optimized for such models. तो इससे हमने एक समरी प्लॉट ड्रॉ किया जिससे हमारे पास कुछ ये आया. अब ये जो समरी प्लॉट है वो ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाता है फीचर्स अक्रॉस ऑल द कस्टमर्स. नाउ हाउ डू वी चेक दिस? The x-axis जो है it represents the shape values uh, which indicate the impact of each feature. So on the right side it increases the shape, on the on the right side it increases the churn probability, on the left side वो decrease करता है. Then जो color है that represents red represents high value and blue represents low value. So हम example ही देखते हैं तभी समझ आएगा. सो ये कॉन्ट्रैक्ट मंथ टू मंथ हो गया जैसे. सो कस्टमर्स ऑन मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ये रेड वैल्यू हाई है, ठीक है. सो मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट जितना बढ़ेगा जितनी वो हाई होगा और ये पॉजिटिव की तरफ है, तो डेट्स वाई कस्टमर्स हु आर ऑन मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट आर मोर लाइकली टू चर्न कंपेयर टू दूसरे जो है. एंड तो इसका हमने ये कंक्लूजन निकाला. सिमिलरली टेन्योर में कस्टमर्स विद लो टेन्योर आर मोर लाइकली टू चर्न. क्यों? क्योंकि जो भी मोर टेन्योर है, सॉरी, कस्टमर्स विद लो टेन्योर बिकॉज यहाँ पे ब्लू है, and because this is the positive, these are the chances of customers getting churn, and blue represents low value. So low tenure means the customers are likely to churn. अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि न्यू कस्टमर्स जो आ रहे हो उसका टेन्योर तो कम ही होता है, तो देयर माइट बी केस कि कस्टमर्स जो भी न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं वो लीव कर रहे हैं.
सो इससे बिजनेस इंसाइट मिल सकता है कि द कंपनी शुड इम्प्रूव ऑन द न्यू कस्टमर्स, उनको एडिशनल सर्विसेज या अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। देन सिमिलरली कस्टमर ऑनलाइन सिक्योरिटी नो, अगर वो हाई है, मतलब अगर कस्टमर ने ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं ली है तो इट दे आर मोर लाइकली टू चर्न एंड सो ऑन। हम ऐसे ही इसके कंक्लूशंस निकाल सकते हैं। सो या नाउ एज आई सेड, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई टू कैलकुलेट शेप इफ यू हैव फीचर इंपॉर्टेंस। Feature importance tells us which features matter, and but shape tells us how and why they matter. So that is one of the main difference. Feature importance ये बोलता है कि tenure is important, but वो नहीं बोलता है कि high tenure increase करता है या decrease करता है churn। So that's why shape is important over here। हमने इसका फिर वो बार ग्राफ बना दिया जस्ट ओवरऑल देखने के लिए कि कौन से ऐसे जो फीचर्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आफ्टर building logistic regression, after building random forest, I also implemented XGBoost if to see if we can improve the performance further. uh, Random forest parallel trees है and XGBoost sequential trees है, so it learns from their mistake. जो भी it focuses on correcting previous errors, which makes it very powerful. अब because so हमने, आपको याद होगा लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में and random forest में we used class weight is equals to balanced approach to counter our class imbalance वाला challenge, right? Here in XGBoost we can't do that. Instead, we what we do we can do is we can calculate, there is something like scale POS weight. बेसिकली ये है कि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें से निकालेंगे कितने हैं, और हम इसको स्केल करेंगे। सो नेगेटिव मतलब कितने बेसिकली वाई ट्रेन में कितने, बेसिकली रेशियो हाउ मच हैव चर्नड एंड हाउ मच हैव नॉट चर्नड, और इसका हमने सिंपल नेगेटिव इज टू पॉजिटिव वाला रेशियो निकाल दिया और हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। तो इससे ये एक्जीबूस्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लास है जो माइनॉरिटी में, और उसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो सिमिलरली हमने अगेन, जैसे हमने बाकी दो स्टेप्स में पहले मॉडल्स में किया था, we use the same preprocessor which has all the pre-processing steps, and we used this metrics, 200 trees हो गया, and learning rate controls how fast the model learns, फिर max depth हो गया, each limits the depth of each tree to prevent overfitting। इससे 4 से ज्यादा लेवल पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो लर्न कर देगा जो हमारा मॉडल है, एंड देन इट विल ओवरफिट, इट विल रिपीट, इट विल लर्न द पैटर्न, सो वी डोंट वांट दैट। सिमिलरली वी यूज्ड स्केल पीओएस वेट, हमने देख लिया, इट हैंडल्स क्लास इम्बैलेंस, एंड देन हाँ, अब इससे क्या हुआ, नाउ हम वी फिट दिस मॉडल एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, वी प्रेडिक्ट, जो भी प्रेडिक्शन आएगा हमने प्रोबेबिलिटी पे प्रेडिक्ट की। इससे हमने आर ओ सी ए यू सी भी निकाला, क्लासिफिकेशन भी निकाला, एंड आर ओ सी ए यू सी केम आउट टू 0.85, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई गेस द सेम विच वी गॉट। एंड हमने इससे परफॉर्मेंस निकाला कंपेयर्ड विद परफॉर्मेंस बिटवीन 3 ऑफ दोज मॉडल्स। तो हमारा परफॉर्मेंस ये कुछ आया। सो एज यू कैन सी द रिकॉल इज बेस्ट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आएगा रैंडम फॉरेस्ट, एंड फिर आएगा एक्जीबूस्ट विच इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल model, right? So although XGBoost is most powerful, it slide हमारे केस में रैंडम फॉरेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम किया है ऑन प्रिसीजन एंड रिकॉल जो हो गया। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो shows that more complex model doesn't always guarantee
better performance. हमारे केस में we wanted recall, and in that जो हमारा simple model था logistic regression, that worked well. We did hyperparameter tuning in random forest. We used XG, हमने फिर वो key fold क्रॉस वैलिडेशन भी किया, बट स्टिल द सबसे सिंपल वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्कड आउट वेल, एंड देन वी सेव्ड दिस मॉडल. Yeah, if this is clear, then I can move to this deployment part. I hope you find it interesting. And the last insight that Shubham has shared, ki, we always have that misconception, na? Ki if we know the complex things, so I have seen, I mean, in the industries that as soon as they will get a data, they directly apply random forest or XGBoost. But Hmm. I always say ki always start with the simpler model and step by step approach towards the complex ones, because Hmm. sometimes the simpler models can work best as comparable to the complex models where it costs more computation as well. And this is the Hmm. wonderful example of that which we have just now explored, right? Hmm. So we have talked about three models over here: simple one, logistic regression; the advanced one, random forest; and further advanced one is XGBoost. We have talked about how we can interpret the model. If let's say the clients will be asking from us that what are the top 10 features which contribute to the prediction that whether the customer will churn or not, we have seen how can we determine that. Apart from this, if the clients further ask from us that why you are saying so, how much is the exact contribution to each and every feature, there the explanation of a model will come into picture. Otherwise, if we won't be able to explain to them, it's kind of a black box, right? And that is where the another interesting concept in machine learning, which is about SHAP values, came into picture. That is also we have seen for the very first time in today's session. I hope all of these pointers are clear to everyone. So now we have talked about from the starting problem understanding. Then he has already discussed about data collection, data understanding part, EDA part, using pipeline and column transformers. How he had just transformed the entire data. After that, model training, how he chose different sort of models, and properly he has demonstrated the differences and the I would say evaluation of each and every model. Now we are at the very last stage where we have to deploy the model in order to make it end to end. And for that, he has used Streamlit, which he will just now demonstrate. There is a question. Um, Hmm. so the question is by again Biswajit. Can you Hmm. have one tip how to choose which model perform good or perform all the model that accuracy is high, select that model, or any shortcut to select the model? Uh, I don't think so. There is any shortcut. I feel because it is according to use case. जैसे हमारे binary classification था. So for that एक बहुत ही but obvious choice होती है logistic regression, right? So we हमने वो किया. Then हमें लगा कि चलो एक simple model हो गया. Now we will go to more complex models. So that's why we chose random forest, and then we chose XGBoost. So yeah, there is, I think, uh, yeah, I know I am not able to answer this question well, but Basically, it depends on the assumptions of the models as well. So hmm, if you know in linear regression, in logistic regression, they said that your data should be linearly separable. So if you're working in yeah, a yeah, use case where your data will be not linearly separable, obviously those models might not work the best, right? hmm, uh, and again, what Shubham have mentioned, ki over here our task was binary classification. That is another reason why logistic regression works the best. But there could be use case where we are solving a multi-class classification problem. वहाँ पे हो hmm, सकता है कि होता ही है मतलब मैक्सिमम सिनेरियोज में कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा काम नहीं करता. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज केस एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू गेन द इंट्यूशन. अब कुछ hmm, ऐसे यूज केसेस भी होंगे जहाँ पे हमें लगता है कि ये मॉडल भी अच्छा काम कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है. So in that case, better idea could be to implement all of them in a pipeline and then compare which one is working the better one, right?
Yeah. When you are working in the industries, you don't have as such limitation on the resources part as well. I mean, they will provide you a good quality laptop, the GPU access and everything. So you can definitely go ahead and try explore. From there also you will build a intuition कि अच्छा इन use cases में maybe ये वाला model better work कर रहा है, right? So that is how I think we usually go for it. I hope this answers your question, Biswajit, right? Yeah. Yep, Shubham, we can proceed to the deployment part now. Yeah. Honestly, I didn't knew how to deploy. मुझे explore ही ये चीजें करनी थी. So I obviously asked ChatGPT कि this is my code and these are my models. अब मैं इसको deploy कैसे करूँ? So ChatGPT suggested me Streamlit that you can use Streamlit. So that's why I used Streamlit. सो बेसिकली हमने इसको ये जो ऐप है मैं आपको अभी डेमो भी दिखाऊंगा उसको हमने दो पार्ट में सेक्शन दो सेक्शंस में डिवाइड किया है वन इज प्रेडिक्शन ऐप फॉर रियल टाइम प्रेडिक्शंस एंड दूसरा हो गया मॉडल इनसाइट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल्स सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जो हमने यहाँ पे सेव किए थे मॉडल्स जॉब लिव से वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं again job libs. So we have imported use a our trained model using job lib. हमने as I told you we have used two tabs prediction and model insights. uh, then I have reused the same preprocessor pipeline which we have used during training which we have discussed I guess and then yeah I guess yeah so in the tab one which I've told that I have made a real-time prediction app. These are the UI elements. So title हो गया, फिर the customer getting to choose a select box हो गया. As the name suggests, वो एक select box आएगा drop down में से, where you can choose कौन सा model आपको select करना है. Similarly ये UI elements है, gender, senior, जो भी हमारे 21 जो थे ना, वो सारे यहाँ पे, as you can see. फिर हमने क्या किया कि जो जो कस्टमर ये जैसे ये वेरिएबल्स में हमारा स्टोर हो गया कस्टमर ने जो इनपुट दिया आई हैव मेड अ डेटा फ्रेम फ्रॉम इट and for prediction and then what we did is I have applied the same pre-processing encoding or scaling so यहाँ पे सेम हमने जो कस्टमर चर्न हमने जो नोटबुक में किया था वी हैव डन द सेम चीज यू कैन सी द शेप वी हैव आल्सो मेड a shape waterfall plot which I will again show you कि वो क्या होता है ऑब्वियसली हमने यहाँ पे चॉइस दी है कि अगर मॉडल चॉइस अगर लॉजिस्टिक हो तो हमें लॉजिस्टिक मॉडल जो हमने इंपोर्ट किया वो यूज करना है अगर आरएफ हो तो आरएफ एक्सजीबूस्ट हो तो एक्सजीबूस्ट एंड बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन वो हमने जो हाई रिस्क मीडियम रिस्क और लो रिस्क किया था वो भी हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन इफ एल्स हमने सिंपल ये इफ एल्स लगाया और कुछ नहीं एंड देन हमने वाटरफॉल प्लॉट किया है वाटरफॉल क्या होता है कि समरी प्लॉट हमने एक शेप में देखा था जो हमें ऑल द कस्टमर्स का समरी दिखा रहा था कि विच फीचर्स आर इम्पोर्टेंट एंड बाय हाउ मच कितना इम्पोर्टेंट है वाटरफॉल क्या करता है रियल टाइम प्रेडिक्शन जो आ रहा है उसमें उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कौन सा मेट्रिक है कौन सा फीचर है जो इम्पैक्ट कर रहा है वी विल सी दैट वो प्लस और माइनस में दिखाएगा और जो टैब 2 है उसमें तो हमने सिंपल जो फीचर इंपॉर्टेंस है वो हमने दिखाया एंड टॉप फीचर्स ये बस प्लॉट्स है बेसिकली टॉप ड्राइवर्स हमारे जो रैंडम फॉरेस्ट में से निकल के आए थे फीचर इंपॉर्टेंस वो है समरी प्लॉट है जो हमने यहाँ पे भी देखा ये वाला ऊपर जो था ये वाला एंड या मैं एक बार ऐप भी देख लेता हूँ ताकि मुझे याद आए कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें थी I'll show you the app first of all.
So this is the app which I have deployed in Streamlit. So let's say logical regression, male, senior citizen. Let's say we don't add any partners, and let's say हम 13 रखते हैं टेन्योर. एंड रिमेंबर हमने बोला था कि हमें फोन सर्विसेज और ये जो सर्विसेज है जो वो नहीं यूज कर रहे, दे आर लाइकली टू चर्न. तो हम इसको एक बार करके देखते हैं जानबूझ के. ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन भी नो रखता है, टेक सपोर्ट नो, स्ट्रीमिंग टीवी और ये भी हम नो कर देते. फिर हमने ये देखा था मंथ टू मंथ में इट इज लाइकली टू चर्न, तो हम ये भी रखते हैं. लेट्स से मंथली चार्ज आ रहे हैं 30 और ऑल टाइम चार्ज आ गया 1000. तो सी ये हाई रिस्क कस्टमर क्यों, क्योंकि 80% है, 0.6 से ज्यादा है. एंड और ये रहा शेप वाटरफॉल. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से मैट्रिक ने कितना. सो कॉन्ट्रैक्ट हमारा मंथ टू मंथ है, उसने सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट किया है प्लस में, चर्निंग में. और हमारा मंथली चार्जेस है, उसने नेगेटिवली मतलब उसको चर्न करने से रोका है. सो दिस वे यू कैन सी द रियल टाइम हमारा ये. सिमिलरली हम रैंडम फॉरेस्ट से ढूंढ सकते हैं कि क्या है. रैंडम फॉरेस्ट में 68.9% आ रहा है, अगेन हाई हाई रिस्क कस्टमर. और अगेन वो ये तो सेम ही है. सिमिलरली हम XGBoost में देख लेते हैं कि क्या आ रहा है. अगेन हाई रिस्क कस्टमर 80%. सो दिस इज द ऐप. जो ये पहला टैब हमारा प्रेडिक्शन का, और ये दूसरा टैब है मॉडल इनसाइट्स का. सो ये जो टॉप ड्राइवर्स ऑफ कस्टमर चर्न, दिस इज द फीचर इंपॉर्टेंस विच वी गॉट फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट, जो हमने नोटबुक में भी देखा. शेप समरी प्लॉट हमने जो अगेन नोटबुक में हमने जो पूरा समरी प्लॉट निकाला था उसका ये रिप्रेजेंटेशन है. इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स है इसलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है. यू कैन एक्सटेंड इट एंड सी. शेप फीचर इंपॉर्टेंस ये भी हमने बनाया था नोटबुक में. सो कौन कौन से फीचर्स कितना इंपॉर्टेंस दे रहे, विच वी हैव सीन. एंड आवर मॉडल परफॉर्मेंस, रिकॉल ऑब्वियसली हमारा लॉजिस्टिक में ज्यादा है, देन रैंडम फॉरेस्ट, देन XGBoost. ROC AOC is almost same, 0.85 86. Now the main purpose which we did all of this is the business insights, is कि हम इसमें से क्या business insights निकाल सकते हैं. So the key drivers of customer churn based on our model analysis और सारे फीचर इंपॉर्टेंस से लेके सारी शेप वैल्यू से लेके हमने ये कुछ चीजें निकाली है. कस्टमर टेन्योर, कस्टमर विद शॉर्टर टेन्योर आर मच मोर लाइकली टू चर्न. तो न्यू कस्टमर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चर्निंग ज्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म कस्टमर. सो दिस शोज दैट कंपनी का जब नया कस्टमर आता है, he or she is not really very happy with the company services. इस केस में टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया. Similarly, contract type. Customers on month-to-month contract show the highest risk, churn risk. Long term contracts such as 1 year or 2 year उसमें ज्यादा. So obviously month to month वाले जो होंगे, हो सकता है they would leave the services within 2 months or 3 months. और इसी की वजह से हमारा tenure वाला चीज भी आ जाता है, राइट. और तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं दे आर सिग्निफिकेंटली देयर चांसेस डिक्रीजेस. मंथली चार्जेस, नाउ हाई मंथली चार्जेस ऑब्वियसली ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर मंथली चार्जेस ज्यादा आ रहे तो वो कस्टमर्स चर्न करेंगे ही करेंगे. प्रोबेबली ये हो सकता है कि जैसे टेलीकॉम में उसका कोई कंपटीशन हो तो वहां पे शिफ्ट कर जाए. सो कस्टमर पेइंग मोर आर मोर लाइकली टू स्विच प्रोवाइडर्स. अगर उन्हें कहीं दूसरी जगह पे बेटर वैल्यू मिलता है. होता ही है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जियो, एयरटेल, वट एवर services which we have. Internet service type. Now, customers using fiber optic shows relatively higher churn rates compared to DSL users. Now, this is a stat uh,
I to be very honest, I didn't really understand कि ऐसा क्यों है, बट ये निकल के बाहर आया कि फाइबर ऑप्टिक्स जो यूज कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी चर्न रेट्स ज्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू डीएसएल यूजर्स। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, कि डीएसएल यूजर्स कम हो, उसके वजह से फाइबर ऑप्टिक में ये ज्यादा दिखा रहा है। So yeah, then lack of value-added services, as we saw, customer without services like online security, tech support, device protection. So ये churn हो सकता है कि ये लोग they are more likely to churn. So if customers ये services को experience ही नहीं करेंगे, तो फिर they might not feel worth जो भी वो ये use कर रहे services, मतलब जो basic services use कर रहे हैं उनको वो शायद worth it ना लगे। सो ये एक रीजन हो सकता है। सो बिजनेस रिकमेंडेशंस ये हो सकता है कि एनकरेज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्काउंट्स और लॉयल्टी रिवॉर्ड से आप उनको खुश कर सकते हो ताकि वो कंटिन्यू रखे। ऑफर बंडल सर्विसेज टू इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, ये एक आइडिया अच्छा है क्योंकि बिकॉज दिस पीपल आर नॉट टेकिंग, सो यू कैन बंडल इट, लाइक स्ट्रीमिंग सर्विसेज में टीवी और मूवीज दोनों रख दो। सो या, टू इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, provide special retention offers for high charging customers to reduce charges। तो ऑब्वियसली बात है, जो जो भी हाई चार्जेस, मंथली चार्जेस जिसके ज्यादा आ रहे, यू कैन प्रोवाइड देम सम सॉर्ट ऑफ ऑफर्स, एंड देन फोकस रिटेंशन कैंपेन्स ऑन न्यू कस्टमर्स विद लो टेन्योर। तो न्यू कस्टमर्स बिकॉज जा रहे हैं, हमने देखा, दे कैन फोकस ऑन सम रिटेंशन कैंपेन्स या ऑफर्स या सर्विसेज। तो ये हमने रिकमेंडेशन, ये तो हमारे साइड से, बट बेसिकली शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेल्स टीम या जो भी मार्केटिंग टीम, वो शायद वो ज्यादा अच्छे से रिवॉर्ड्स या ऑफर्स ला पाए। वी कैन ओनली गिव दिस इनसाइट्स। सो या, आई गेस। Perfect. So I think we have finished our end-to-end project demo now. Um, I hope that you guys have enjoyed the discussion. I personally have enjoyed a lot. Thank you so much, Shubham, for spending the time and showcase your work to the entire audience. I'm pretty sure that everybody after this session also many people will watch, and definitely they will get a lot of insights on what exactly do we have to do in the end-to-end pipeline. Because whenever I used to go to any event, the common question is, what do we mean by end-to-end projects? What are the exact things we supposed to do? So this is a quick demo of all these stuffs what he has showcased. Already the code files and everything is already there in his GitHub. You can find in the description of this video. Also, if you have any questions, you can also mention in the comment section. Maybe me or Shubham will respond to your comments if there are any. Um, with that, if there are no questions right now, we can wrap up. Already, we plan to have a session of 1 hour, and it's already 1 hour, approximate 20 minutes. So we already stretched 20 minutes more. Um we want same related live discussions. Definitely we'll plan more every week. Usually I tried my level best to come live every week, but sometimes I can do it, but sometimes there are a lot of other works and commitments. But definitely I'll try to do more often with other learners as well. um, Perfect. Also, he's also part of the data specific projects course, and there only we discussed about this customer churn project. I just started and showcased them how exactly it looks like, and then these learners have done everything right. Uh, Similar project, similar course you will find on my website, Tech for All with Priya. Regarding the building of data projects, you can explore this project. This course project also I have launched, I think, 1 week back. Many people already might knew about this, but those who are not aware, you can just check the website. You will get to know. Already, I think the link is in the pinned part of this chat window. You can have a look onto it. So if anyone is interested, they can definitely grab this opportunity. With that, I think we can end this discussion. Thank you so much, Shubham, once again. Do you have some ending words? Because you have entirely lead this session for everyone, and then we can end. Yeah, thank you for giving me this opportunity.
And thank you everyone for listening to me. Please excuse me if I made any mistakes while explaining, or I didn't explain any concept well. I am available on LinkedIn and I have my code on GitHub. So you can definitely refer to the code, and or we can have small discussion if you have any doubts as well. I don't mind that. Thank you very much. I really enjoyed. Thank you. Thank you so much. Let me end the stream. Bye bye, everyone.